कैसे मुझे तुम मिले, कैसा मुझ पे है यकीन। सबसे खतरनाक केमिस्ट्री के चैप्टर, दिस इज नॉट अ वीडियो ऑफ आईएमपी चैप्टर की लिस्ट, लेकिन फिजिक्स का मैंने पार्ट 1 बनाया था कि वो चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज तो आते हैं और सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में यहीं से करूंगा। ऑर्गेनिक में सबसे पहला अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना लंबा चैप्टर है कि एक जगह नहीं मल्टीपल जगह बच्चे अपना फोकस लूज करते हैं, इसलिए हर बार कोई ना कोई कॉर्नर टॉपिक से क्वेश्चन निकाल लेता है। मेक श्योर यू डू सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। फिर फिजिकल में इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑफ कोर्स लंबे तो है ही, एंड एक नहीं मल्टीपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप करके मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ सब टॉपिक निकाले हैं जिनके रेगुलर क्वेश्चन आते हैं और हर साल पेपर पूछा जाता है। तो पूरे केमिस्ट्री के पेपर में 150 नंबर से ऊपर की मैं सब टॉपिक बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 150 सोच रही कि से तुम आसानी से जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर पाओगे, तो फटाफट से इस वीडियो को देख लो। 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देख लोगे, कुछ कुछ रिएक्शंस को ध्यान रख लोगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन है बेटा, वहां से आप आज के सेशन के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। देखो क्या अमेजिंग नोट्स है, नोट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। तो बेसिकली यूट्यूब पर भी मैं जो है नीट 2025 के लिए इसको बिल्कुल फ्री में कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन चलिए फटाफट से आप करते हैं शुरुआत। भाई देखो यार, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक चीज, और वो क्या कि एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट प्लस वाटर का। जैसे NaOH प्लस HCl आपस में मिले तो NaCl बना, जो कि एक सॉल्ट है। अब NaCl में Na पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? बट Na पॉजिटिव हमारा जो कैटायन है वो बेस से आ रहा है, और हमारा जो Cl नेगेटिव है जो कि हमारा एनायन है वो हमारा कहाँ से आ रहा है? एसिड से आ रहा है। तो कैटायन को इसीलिए आप बेसिक रेडिकल बोलते हैं, क्योंकि कैटायन बेस से आता है। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells, जो tangential as well as radial walls होंगी हमारे की radial walls of endodermal cells have a deposition of water impermeable material known as sovereign in the form of Casparian strips.
Next to endodermis lies a few layer parenchymatous thick walled cells referred to as a pericycle. Initiation of lateral growth and vascular cambium during the secondary growth. Initiation of lateral growth and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. The pith is small or inconspicuous. The parenchymatous cells, which lies between xylem and phloem, are called conjunctive tissues. These are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. Later, a cambium ring develops between the xylem and phloem. All tissue on the inner side of एंडोडर्मिस such as पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टेल मोनोकॉटिलेडन की बात करेंगे तो द anatomy of monocot root is similar to the dicot root in many respects. It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle, pith. As compared to the dicot root, which have fewer xylem bundle, there are usually more than 6 sporia xylem bundle of monocots, and pith is large and well developed, inconspicuous and small. Pith is large and well developed. Monocotyledons root do not go any secondary growth. Root hair, epidermis, cortex, endodermis, pericycle, protoxylem, metaxylem, oxygen. The first from primary xylem elements are called protoxylem, and the later form primary xylem is called metaxylem. In stems, the protoxylems जो है वो सेंटर की तरफ होते हैं, and the metaxylem lies toward the picture of the center. This type of primary xylem is known as endarch. In roots, the protoxylem lies toward the periphery and metaxylem lies toward the center. Such arrangement of primary phloem is called exarch. Dicotyledonous stem. This is pericycle. This is phloem अंदर की तरफ. जो मैंने बताया experience of corner बोला. Transverse section of a typical young dicotyledon stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem, covered with a thin layer of cuticle. It may bear trichomes and a few stomata. इसके पास trichomes होते हैं, कुछ stomata होते हैं. The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle. जो cells होते हैं lateral layer एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में कॉर्टेक्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं. कंसिस्ट ऑफ थ्री स्पोर. द आउटर इज हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ coloncymatous cells just below the epidermis which provide mechanical strength to the young plant, and cortical layers below hypodermis consist of a round thin walled parenchymatous cells with a conspicuous यानी कि large intracellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch grain, and the layer is also referred to as the starch sheath. Pericycle is present in the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary layers. In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary rays. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. Each vascular bundle is conjoint, open, and with indulged protoplasm. A large number of rounded parenchymatous cells with a large intracellular spaces which occupies the central portion of the stem constitute the pith. The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundles, each surrounded by a sclerenchymatous ground tissue. Each surrounded by sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. Vascular bundles are conjoint and closed. Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located ones. The phloem parenchyma is absent and water-containing cavities are present within the vascular bundles. Protoxylem in monocot stem. Protoxylem in a monocot stem disintegrates and form water cavities. जो प्रोटोजाइलम होते हैं, they disintegrate and forms water cavities. Size और lysogenous in origin. The vertical section of dorsiventral leaf. Pseudolamina shows three main parts, namely epidermis, mesophyll, and vascular system. The epidermis, which covers the both upper surface and axial and the lower surface of the axial of the leaf, has a conspicuous cuticle. The axial epidermis generally bears more stomata than the axial epidermis. The latter may even lack stomata. The tissue between the upper and the lower epidermis is called mesophyll. Mesophyll, which possesses chloroplast and carry out photosynthesis, is made up of parenchyma. Has two types of cells:
The palisade parenchyma and the sponge parenchyma, the adaxially placed parenchyma. The adaxially placed parenchyma is palisade parenchyma made up of elongated cells which are arranged vertically and parallelly to each other. The oval, round, and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cell and extends to the lower epidermis. There are numerous large spaces and many cavities between these cells. Vascular system include vascular bundles. जो vascular system होता है that includes vascular bundle which can be seen in the veins and midribs. Vascular system includes vascular bundle which can be seen in the veins and the midribs. The size of the vascular bundles are dependent on the size of the veins. ठीक है. The veins vary in the thickness and the reticulate variation of dicot leaves. The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath. The vascular bundle are surrounded by layers of thick walled bundle sheath. The anatomy of isobilateral leaf is similar to the dorsolateral leaf in many ways, show the following characteristic difference. मोनोकोट स्टेम की वेस्कुलर बंडल्स भी हमारे बंडल की तरह होते हैं and dicot leaves की भी. Isobilateral leaves, the stomata are present on the surface of the epidermis and the mesochondrial. In grasses, certain adaxial epidermal cells along with the modify themselves into in grasses कुछ adaxial epidermal cells जो कि modify हो जाते हैं along the veins into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves has absorbed water and water, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaves pulse inward to minimize water loss. The parallel variation in monocot leaf is reflected in the nearly similar sizes of vascular bundle sheath. Xylem, phloem, phloem तो अंदर दिखता है. Cavity, spongy mesophil, substromal cavity, stroma, backside epidermis, and exhaled epidermis. Xylem, mesophil, substromal cavity. तो अब हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं. प्लान बी का थोड़ा हिंट तो दे दो. तुम्हें क्या करना है मेरे प्लान बी का? दीदी कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई. चलो आज एक चीज़ ट्राई करते. ठीक है.
गाइस चलो चलो चलो, ये अब मज़ा आएगा। तुम लोग ये पोल भरो। कुछ एंटरटेनमेंट का। इस पोल का आंसर करो भाई। तब तक मैं अपने क्वेश्चंस करती हूँ और मैं चार बंद कर देती हूँ, है ना। अरे वाह, पेनी हुआ नहीं तो।
40% लोगों को लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए। गाने सुने नहीं भाई, नहीं सुने। मतलब 4 लोगों को लगता है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो तुम लोग ये भी बताओ ना क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये तो तुमने खुद मांग किया कि आई विल टेल व्हाट टू इम्प्रूव, तो करो इम्प्रूव, बताओ क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए तुम्हें। गद्दार हूँ तुम सबके सब है। मतलब तुम 4 लोगों को लगता है कि तो यात्रीगण, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। मित्रगण, मित्रगणों, मित्रगणों, जो भी है, जो भी बोलते हैं, आप लोग जो भी हैं, क्या कर रही हूँ मैं, ये क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ से करना, यहाँ से।
तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जिन भी 4-5 लोगों ने बोला है कि मेरी लाइव स्ट्रीम में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो कृपया करके मुझे बता दें कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। बिकॉज़ ध्यान से पढ़ें तो आपने इसी चीज़ पे मार्क किया है कि आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। तो थोड़ी सी मेहरबानी करते हुए हमें बता दीजिए कि हमें इम्प्रूव क्या करना है। और जिन भी मित्रजनों को हमसे किसी भी तरह की वार्तालाप करनी है या हमसे किसी भी तरह के सवाल जवाब करने हैं, तो वो कृपया 1 घंटे बाद आएँ, लेकिन हम एक कार्य में व्यस्त हैं, तो हम आपके लिए 1 घंटे बाद उपलब्ध हो जाएंगे। ये क्या आ गया? तो अलग ही पेज खुल गया कुछ। देखो गाइस, मैंने 31 क्वेश्चन करे जिसमें से सारे सही हो, बस एक गलत है। ज़रा इसका भी देख लेते हैं क्या गलत है। 12वां प्रश्न गलत है हमारा। पेरिडम डज नॉट इंक्लूड, ये तो सिलेबस में नहीं है। हाँ, मैं नहीं मानती इसे गलत है। पेरिडम मैं क्यों देखूँ इसको? मेरे सारे बात सही है। क्या बोला जाए, क्या इस टॉपिक के ऊपर हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए? हम रेड पेन से लिखेंगे ताकि अगर हम देखें बाद में तो हमें पता चले कि हाँ हमारे पास रेड पेन खो गया है। हम ब्लैक से लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से फील नहीं आ रही, हमें रेड पेन यूज़ करना पड़ेगा। ओह मिल गया, रेड पेन मिल गया। चलो अगले टॉपिक के लिए हम रेड पेन यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। दोस्तों, ना कोई मंजिल है। क्या आप बोल रहे हो? मुझे नहीं बोलना, चुप करो भाई। ना कोई मंजिल है, बस चल पड़े हैं हम सफ़र की तलाश में। क्या बकवास करती हूँ मैं, पर मेरे को बकवास करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बकवास करते रहनी चाहिए लाइफ में, लेकिन अगर आप बकवास नहीं करोगे तो फिर आप लाइफ में क्या करोगे? इसीलिए बोलते रहो, कुछ भी बोलो, बस बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा हक है, बोलो। जी सारा बनना होगा। चलो, the flower is a reproductive unit in the angiosperm. It is meant for sexual reproduction. A typical flower has a 4 different kind of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or a pedicel called thalamus or receptacle. These are calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx and corolla are the accessory units, and while androecium and gynoecium are the reproductive units. In some flowers जैसे कि लिली, calyx and corolla distinct नहीं होते हैं, but as a term as a perianth. जब फ्लावर के पास दोनों एंड्रोशियम एंड गायनोशियम होंगे तो बोलेंगे बायोसेक्सुअल। एक फ्लावर के पास इधर स्टेमन इधर कार्पेलोकॉस यूनिसेक्सुअल। सिमेट्री की बात करें तो फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज रेडियली सिमेट्रिक, जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरली सिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियली, यार मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, तो इसे हम लिख लेना चाहिए। हमारे पास फेविकॉल की कमी पड़ रही है बस। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, और इसके एग्जाम्पल हो गए अपने पास मस्टर्ड, चिली, धतूरा। जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास पी, बीन, केशिया, गुलमोहर। एंड एक हो गया एसिमेट्रिक, दैट इज हमारा किना। Flower may be trimerous, tetramerous and pentamerous.
3, 4, 5 respectively. Flowers with bract reduced leaf found at the base of pedicels are bracteate, and those without bracts are ebracteate. Based on the position of calyx, corolla, and roscium in respect to ovule and the thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous, epigynous. In the hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest place. In the hypogynous flowers, gynoecium occupies the highest place, while the other parts are situated below it. The ovary in the such flower is said to be superior. That is example mustard. Now China must have brinjal, China rose, and mustard. If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the trim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be inferior. Example plum, peach, rose. In epigynous flower, the margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower rises above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior as in flowers guava, cucumber, and ट्रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर. अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं. हर फ्लावर की 4 फ्लोरल वॉल्स होती हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स. जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. कैलिक्स में बी गैमोसेपलस एंड polysepalous. Corolla is composed of petals. Petals are usually brightly colored to attract insect for pollination, like calyx. Corolla may also be gamopetalous or polypetalous. The shape and the color of the corolla vary greatly in the plants. Corolla may be tubular, bell-shaped, funnel-shaped, or wheel-shaped. Androecium, gynoecium, corolla, calyx, and pedicel. Estivation, the mode of arrangement of sepals or petals in the flower bud with respect to other members of the same word, is known as the estivation. The main type of estivation are velvet, twisted, imbricate, vexillary. जो species of the sepals or petals in a word just touch said to be velvet. One margin of the appendage overlaps that of the other next one, and so as in China rose, ladyfinger, cotton. तो वैसे करके इसको करता है, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड. तो वो होगा चाइना रोज, लेडी फिंगर्स एंड कॉटन के अंदर. अगर मार्जिन सर्कल के ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी, तो उसे बोलेंगे इम्ब्रिगेट, केशिया एंड गोलबोहर. P and B flowers, there are 5 petals. The largest standard overlaps the 2 lateral wings, and which in turn overlap the smallest anterior petal keel. This type of estivation is known as vexillary or papilionaceous. Androecium is composed of stamen. Each stamen, which represent the male reproductive organ, consists of a stalk or a filament. Consists of a stalk or a थोड़ा तेज बोलो, क्या बोल रहे भाई. प्लान बी, थोड़ा तो आइडिया दे दो दीदी, मेरा भी फर्स्ट जॉब है, समझ नहीं आ रहा क्या बैकअप रखो एग्ज़ाम के बाद. मैं नहीं बता सकती यार, मैं नहीं बता सकती. थोड़ा तेज़ बोलो. अच्छा, मत करो इतनी पढ़ाई, क्यों भाई. साथ में फॉलो करें, बता सकते हो, अच्छा लगेगा तो कर लेंगे भाई साहब. मैं ये कह रही हूँ जितने भी लोगों ने आई विल टेल व्हाट टू इम्प्रूव लिखा है, ये बताओ तो सही व्हाट टू इम्प्रूव. या सिर्फ तुमने ऐसे मार्क करा है, पढ़ के मार्क नहीं करे क्या. विनीशन, चलो फिर से चैट ऑफ करने की बारी आ गई है. चलो चलो, ओ किसी का आ गया. आर यू अपीयरिंग स्टूडेंट. येस आई एम अपीयरिंग स्टूडेंट.
Male reproductive organ consists of a stalk or a filament, and then each stamen is called staminode. Stamen of flower may be united within the other member, such as petal or among themselves. When stamens are attached to the epipetalus, उसको बोलेंगे तो वो होगा ब्रिंजल के अंदर. Epiphyllus perianth से attach होगा, उसको बोलेंगे lily. The stamens may either remain free or may be united in the varying degree. The stamens may be united into one bunch or one bundle monodelphous, जैसे कि China rose. Two bundles के अंदर हमारा diadelphous as in P, or into more than two bundle polydelphal as in citrus. There may be variation in the length of filament within the flower as in salvia or mustard. Salvia 4 stamen 2 long होंगी and mustard के अंदर tetradidymus. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpels. A carpel consists of three parts, namely stigma, style, ovary. Ovary is enlarged basal part on which lies the elongated tube. The style connects the ovary to the stigma, and the stigma is usually at the tip of the style and is receptive surface for the pollen grains. Each ovary bears one or more ovule attached to a flattened cushion-like placenta. When more than one carpel is present, there may be free or as in lotus, rose, mycelia, and syncarpal भी हो सकते हैं. This carpel this oval कार्पल्स इज प्रेजेंट, दे मे बी फ्री. अगर कार्पल प्रेजेंट है तो वो फ्री भी हो सकते हैं. एंड सिनकार्पस भी हो सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड टमाटो के अंदर. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट. द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. द प्लेसेंटेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्रीसेंट्रल. मार्जिनल प्रेजेंटेशन के अंदर प्लेसेंटा फॉर्म्स अराउंड रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on this ridge forming two rows as in peas. When the placenta is exiled and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placenta is said to be exiled, as in China rose, tomato, lemon. In the parietal presentation, ovule developed on the inner walls of the ovary or the peripheral part. Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to formation of falsetum. Example, mustard and argemone. When the parietal के अंदर mustard argemone हो गया. When the ovules are born on the central axis and septa are absent. When the ovules जो है हमारे central axis के अंदर present है and septa are absent, as in dianthus and primrose, the placenta is free central. PDF. एंड बेसल की बात करेंगे तो मैरीगोल्ड, सनफ्लावर. ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं. Inflorescence, flowers and parts of flowers. Inflorescence को भाई inflorescence तो पढ़ेंगे. A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral apical meristem. Internodes do not get elongate and axes get condensed. The apex produce different kind of floral appendages laterally at the successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transfers into flower, it is always solitary. The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence, depending on whether the apex get developed into flower or continues to grow. Two major types of inflorescence are defined: racemose and thymose. Racemose type of inflorescence में मेन एक्सेस कॉन्टिन्यूस टू ग्रो एंड उसको एक्रोपेटल बोलेंगे. एंड साइमोस के अंदर बेसिपेटल बोलेंगे. अब हम लोग बना सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन. एपिपेटलस इज फाउंड इन द ब्रिंजल, chili, actinomorphic, thalamus, swollen end of the pedicle, cassia, bilateral symmetry, canal, zygomorphic. Perigynous flowers are found in perigynous, plum, peach, rose. Exile placentation is found in the tomato, China rose, and lemon. In floral formula of Fabaceae, the corolla is represented as 1, 2, 2. Basically, right. Question number 6. Which one of the following plant has these characteristic economic flower? Hypergynous, semifibrous, and parietal. Actinomorphic.
चिली धतूरा मस्टर्ड होना चाहिए फिर तो। अभी हमने पढ़ा था तो क्या मैरीगोल्ड तो दे सकते हैं। Usually the anther in the endocrine has two lobes and each lobe has two pollen sacs. Primrose होता है। हाँ भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया है। प्लान भी मैं नहीं बता सकती। तो क्यों जाना है प्लान में? क्यों जाना है प्लान में?
हेलो हेलो रेखा यादव, आई एम सो सॉरी यार, क्योंकि एक्चुअली पता है ये चैट मैंने इसे ना ऑफ करके रख रखी है तो मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैंने अभी चेक किया तो एंड भाई नहीं, मैं आकाश से अभी नहीं पढ़ती हूँ। लाइक मैंने 9, 10th 11th 12th आकाश से पढ़ी है एंड लाइक ये टॉप ईयर में मैंने यकीन होने पढ़ा नीट 2000 यकीन PW से पढ़ रही हूँ मैं। वॉइस स्लो है, ओके रुक जाओ, थोड़ा सा ना बनाना पड़ता है अपने वोकल कोड को ऐसा। तो सुनो, मैं आकाश में पढ़ती थी लाइक 9th 11th 12th 4 साल मैं आकाश में पढ़ी हूँ, पर अभी मैं आकाश में नहीं पढ़ती हूँ, मैं PW यकीन से पढ़ रही हूँ ड्रॉप ईयर में अपने, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, इसको सही तो कर जाती भाई। क्लास 12th परसेंटेज 86 ब्रो। आई एम लक्ष्य जे स्टूडेंट। अच्छा भाई, नाइस। मोड को उठाया तो सारी मोड को ही पहले ख़त्म कर लेते हैं। CBSE, हाँ जी हाँ जी। अरे वाह तान्या, तुम ऑफलाइन टेस्ट देते हो? हाँ भाई देते हैं। देखो मेरे को चैट फिर से बात बंद करनी पड़ेगी क्योंकि फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। तुम लोग बातों में लगा लेते हो मेरे को, तुम लोग बहुत वैसे लोग हो। भाई साहब इसकी वॉल्यूम बहुत तेज़ है। ठीक है पढ़ो आप। ओके, कहाँ से? आकाश या एलन? दोनों में से कुछ भी नहीं भाई, PW से देती हूँ मैं। क्या फ़ायदा यार ये लाइट चलाने का जब मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ा पा रहे भाई। अच्छा ऑफलाइन देती हूँ भाई, RTS ऑफलाइन देती हूँ, फास्ट ट्रैक के पेपर देती हूँ, बहुत सारे पेपर है भाई मेरे को, ऐसा के सारे मतलब पूरा पैक हो रखा है। मार्च के पेपर तो भाई पता है मैं जान के नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना कवर करना है ये अच्छे से अपने हिसाब से, इसीलिए नहीं दे रही मैं। अभी और कितने टेस्ट हो गया अप्रॉक्स? मेरा टारगेट तो है कि मैं 30 टेस्ट तक दे दूँ, सब कुछ मिला के एंड लाइक ऑफलाइन वाले और खुद से 30 टेस्ट तो देने हैं मेरे को कम से कम। 200 प्लस सब्सक्राइबर बढ़ गए कुछ दिनों में। अरे यार आज नहीं बढ़ रहे यार, कुछ दिनों की क्यों बात कर रहे हो तुम? आज की बात करो। आज का मेरा टारगेट है 410 जाने का एंड होपफुली हम चले जाएंगे। समरी डायग्राम टेबल, तुम आदित्य जोशी जैसी बातें क्यों कर रहे हो? PW के 10 हो जाएंगे है ना, और PW के फास्ट ट्रैक वाले लाइक 5-6 हैं। कहाँ गया वो? या देखो
एक दो तीन चार पाँच छः, छः फास्ट ट्रैक वाले हो गए, 3 RTS हो गए, कितने हो गए 9, 10 मेरे ये पेपर हो गए और रैंक बूस्टर्स वाले कितने हो गए 20। एंड एक और ये चल रहा है एक, लाइक कितना बचा है, एक दो 22। बाकी देखेंगे कहाँ से निकालेंगे कहाँ से नहीं निकालेंगे। और अभी एक मैं दे भी चुकी हूँ, मेरे पास ये भी तो पढ़े हैं अभी, PYQs वाले जो पिछले साल की हैं, और FTS जो हैं ये भी तो पढ़ना है। पेपर तो मिल जाएंगे भाई, पेपर की चिंता क्यों कर रहे हो तुम। FTS के ले सकते हो, हाँ हाँ FTS भी है मेरे पास। नेट बंद हो गया। पहले ये कवर कर लो बायोलॉजी का पेपर से, तब हाँ जी हाँ जी ठीक है कवर कर लेंगे वो। अब मैं ज़रा मोर से दोबारा कर लेती हूँ, इस टाइम वाला पार्ट रहता है, एक बार ख़त्म करके ही चलते हैं इसको। The stem may not always be typically like what they are expected to. They are modification to perform different functions. Underground stem of potato, ginger, turmeric, zameen curd, colicaceous are modified to store food in them. Ginger, turmeric, potato, जिस चैप्टर में डायग्राम्स और टेबल्स इतना नहीं है वो क्या पढ़ेंगे फिर, बताओ बताओ। Potato, ginger, turmeric, jamaican, colocaceas are modified to store food in them and they are also acted। भाई कुछ तो हो रहा है मेरे फ़ोनों को आज, कहीं इधर टैब गिर रहा है, उधर फ़ोन गिर रहा है, गजब चल रहा है इनका भी। Potato, ginger, turmeric, jamaican, colocaceae are modified to store food in them. They also act as organs of pollination to tide over conditions unfavorable for growth. Stem tendrils which develop from axillary buds are slender. Stem tendrils which develop from axillary buds are slender and spirally coiled and help plants to climb, such as in gourds and grapevines. Gourds, cucumber, pumpkin, watermelon, and grapevine. Axillary bud of stem may also be modified into woody, straight, and pointed thorns. Thorns are found in many plants such as citrus, bougainvillea. They protect plants from browsing animals. Some plants of arid region modified their stems into flat and opuntia or flashy cylindrical. सबसे पहले browsing animals से बचाने के लिए tendrils जो कि slender spirally होते हैं, gourds के अंदर cucumber, pumpkin, watermelon and grapevines. And thorns there are modified into citrus, bougainvillea. एंड कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप को फ्लैट एंड पंचिया एंड सिलेंड्रिकल यूफोपिया के अंदर मॉडिफाई करते हैं। Contain chlorophyll and contain photosynthesis underground stem of some plants such as grass. Strawberries spread to new niches and when older parts die, new plants are formed. Grass, oxalis, strawberry, cynodon. In plants like jasmine and mint, slender little branch formed like from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downward to touch the ground. A lateral branch with a short internode. A lateral branch with a short internode and each node bearing rosette of leaves and a tuft of rose is found in the aquatic plant like Pistia and Eucornia. In banana, pineapple, chrysanthemum, lateral branch originates from the basal and underground portion main stems grows horizontally beneath the soil and come out obliquely. इसको बोलते हैं sucker, banana, pineapple, Pistia, Eucornia, offset and jasmine mint हमारा stolon and you runner, grass, venice, strawberry. Bulbil gave succulent, opuntia, euphorbia, cacti, ruminaceous, bryophyllum. Cell. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. Cell envelope consists of a tightly bound three-layered structures. Outermost glycocalyx, followed by the cell wall, and then plasma membrane. Although each layer of the envelope performs the distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences
in the cell wall and the manner in which they respond to the staining procedure developed by gram, which those that take up the gram stain are gram positive and those that do not are called gram negative. Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheath slime layer in some, while in other it may be thick and tough called the capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or collapsing. The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similarly structured lead to the similar structurally to that of the eukaryote. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicle, tubules, and lamellae. They help in the cell wall formation, DNA replication, distribution to the daughter cells. They also helps in the respiration, secretion to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore, which contain pigments. Bacterial cells may be motile, non-motile. If motile, they have a thin filamentous extension from their cell wall. जिसको flagella बोलेंगे. Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. Bacteria flagella is composed of three parts: filament, hook, and basal body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. Beside flagella, pili, fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. They are elongated tubular structure made of a special protein called pillin. The fimbriae are small vessel-like fibers putting out of the cells in some bacteria. They are known to help attach bacteria to toxin stream and also the host tissue. Neural system may across move by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher to lower water may also moves across the membrane. From higher to low concentration movement of water by diffusion is called osmosis. As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require carrier protein on the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ion or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to high concentration. Such as transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport, example Na plus K plus. As you may recall, a non-living rigid structure called cell wall forms an outer covering of the plasma membrane of the fungi and plantae. Cell wall not only gives shape to the cell, protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable molecules. Algae have a cell wall made up of cellulose, galactons, mannans, and minerals like calcium carbonate, while in other plant it consists of a cellulose, hemicellulose, pectins, and protein. The cell wall of young plant cells, the primary wall, is capable of growth. The cell wall of young plant cells, the primary wall is capable of growth, which gradually diminish as the cell matures, and secondary wall is formed on the inner side of the cells. The middle lamella is layered mainly of calcium peptide, which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella may be transversed by a plasmodesmata, which connect the cytoplasm of the neighboring cell. An elaborate network of filamentous proteinaceous structures consisting of microtubule, microfilament, and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. The cytoskeletal in a cell is involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cells. Cilia and flagellas are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cell membrane की hair-like outgrowth होती है जैसे कि cilia and flagellas are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are small structures which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagellas are comparatively longer and responsible for cell movement. Flagellas are comparatively longer and responsible for the cell movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. The electron microscope study of cilium or flagellum shows that they are covered with a plasma membrane. Their core, called the exoneme, possesses a number of microtubules running parallel to each other. The exoneme usually has a 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules. Such an arrangement of exonemal microtubule is referred to as a 9 plus 2 array. The central tubules are connected by the bridges and is also enclosed by a central sheath. The central microtubules are
The central microtubules are connected by bridges and is also enclosed by the central sheath, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure. दोनों cilium भी और flagellum भी they emerge from the centriole-like structure जिसको हम लोग basal bodies बोलते हैं. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. They are surrounded by amorphous pericentral materials. Both the centrioles in a centrosome lies perpendicular to each other, in which each has an organization like cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers of tubular protein. 9 evenly spaced peripheral fibers of tubulin protein. Each of the peripheral fiber is triplet. The adjacent triplet are also linked to the central part of the proximal region of centriole. Is also proteinaceous and is called hub and is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spoke made up of proteins. The centrioles form the basal bodies of the cilia. The centriolate forms the basal body of the cilia, flagella, and the spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. Marginal placentation रुक जाओ यार. Marginal presentation, no? I guess P being all the best. Bye friends. Study time. मॉर्फो की पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल पढ़ने होंगे.
हेलो 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 यार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। आई थिंक मैं इस लाइफ को एंड कर दूँगा यार। चलो मैं ब्रेक लेकर आती हूँ, ठीक है। चलो मैं इसे बंद करती हूँ, मैं ब्रेक लेकर आती हूँ आराम से अपना 9:30 तक दोबारा लगा दूँगी एक लाइट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।